Morning, dear students. Today I am here to tell you about the class 10 science lesson number 2 topic common salts. So many salts we have done in the class. So today I am going to start this anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate is known as the soda ash. Anhydrous. There are two types of salt: hydrated salt and anhydrous salt. Anhydrous salts are those salts which don't have water of crystallization. And hydrated salts are those salts which have water of crystallization. At the end, I'll discuss this also. So, anhydrous sodium carbonate means we can simply say it is the Na2CO3. Anhydrous sodium carbonate, we can simply say Na2CO3, and this is known as the soda ash. It is also known as the soda ash anhydrous sodium carbonate, which is the without water of crystallization. Or we can say crystalline decahydrate sodium carbonate. Crystalline deca means 10 and hydrate means water of crystallization. So which are having the 10 water of crystallization, and this its common name is washing soda. Washing soda is the common name. If you want to describe with the water of crystallization, then we can say this is the crystalline decahydrate sodium carbonate. And what is the formula? Crystalline decahydrate sodium carbonate Na2CO3 dot 10H. Na2CO3 dot H2, and commonly it is known as the washing soda. So today I am going to start with the preparation of the washing soda. And soda ash is what? It can become in the example in 1 mark question. The anhydrous sodium carbonate is called what? Yeah, what do you mean by soda ash? So soda ash is simply Na2CO3. Anhydrous means without water of crystallization. So यहाँ पे अब मैं बात कर रही हूँ preparation. How can I prepare this washing soda? इस वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? सो वी कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम द बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा आपको बता दूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला NaHCO3. व्हाट इज द अदर नेम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. यू शुड नो ईच एंड एवरी नेम बिकॉज इन द एग्जाम एनी नेम दे कैन आस्क. वी डोंट नो कि किस नेम से कोई चीज आ गया, तो अगर किसी कंपाउंड के 2 3 जितने भी नेम है वो आप जरूर सारे लर्न कीजिए. ठीक है. NaCO3 बेकिंग सोडा. इसे अगर हम हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चा? सोडियम कार्बोनेट. अगेन दिस इज द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बिकॉज हियर इज नो वाटर ऑफ crystallization and carbon dioxide gas and water. And what is this process called? This process is called the solvate process. What is this process called? Solvate process. But this is not the washing soda. When it will become the washing soda? When water of crystallization will be added in this, then it will become the washing soda. So in the next step, we are going to this only, the sodium carbonate plus 10H2, because the formula of washing soda is 10H2 plus 10H2 gives you Na2CO3 dot 10H2, and this is my washing soda. And what is the other name? We cannot call it as a sodium carbonate. No, sodium carbonate is the soda ash. We can call it as a decahydrate sodium carbonate. Deca, that means in which 10 water of crystallization is. Right. So this is the preparation of your washing soda. Now next what will come in our mind, the uses. What are the uses? इसके uses क्या है? और it is also the, we can say, hydroscopic in nature. ये जो substance है, it is hydroscopic in nature. कि अगर हम इसे एयर में रखेंगे ड्रायर में तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज भी कर, ठीक है. इट कैन ऑल्सो लूज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और जब हम इसे एयर में रखेंगे तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके लूज हो जाएंगे. और वी कैन से अगर हम इसे हीट करते हैं, अगर मान लीजिए इसे हम हीट करते चले जाएंगे और हीटिंग सोडा एड, अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? सोडियम कार्बोनेट एड. ओनली सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडा एड. ठीक है. तो जब इसे एयर में एक्सपोज करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होते जाएंगे, और जब स्ट्रांगली इसे हीट कर देंगे तो ये 10 के 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चले जाएंगे बाय हीटिंग, and it will become the soda ash, that is only sodium carbonate, right? Anhydrous sodium carbonate we can say. And what are the uses? हर salt के आपकी preparation and uses ये दोनों important है इस chapter में, right? So what are the uses of this washing soda? इस washing soda के uses है, this is the softening, laundering, मतलब softening में जैसे hard water को soft करने में आता है, laundry में इसे use किया जाता है, cleaning में इसे use किया जाता है, and second in the manufacture of glass, सोप, बोरेक्स एक फर्टिलाइजर होता है उसमें यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा में यूज किया जाता है. पिछली क्लास में मैंने बताया था कास्टिक सोडा NaOH.
paper, paint and textile industry. Paper, paint and textile industry में that you have to learn, right? And in the quantitative and qualitative analysis, lab में quantitative analysis होती है जिसमें quantity निकाली जाती है, qualitative analysis होती है जिसमें quality बताई जाती है. तो वो लैब में ये इसका यूज किया जाता है इन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. और एज ए वाटर सॉफ्टनर, वाटर हार्डनेस जो वाटर की होती है उसे सॉफ्ट जो करता है वो भी इसकी हम कर सकते हैं. ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वी कैन से. उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड कंपाउंड है आज के लिए बेकिंग सोडा. तो आपका हो गया. सेकंड कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. दिस इज द सेकंड कंपाउंड. दिस इज आवर फर्स्ट. वॉशिंग सोडा इज द फर्स्ट कंपाउंड फॉर टुडे एंड दिस इज द सेकंड कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. And what is the common name? Bleaching powder. And what is the formula? CaOCl2. CaOCl2. Calcium oxychloride bleaching powder. सारे नेम पता होने चाहिए आपको with the chemical formula, right? And how it can be formed? It can be formed from the slaked lime. Slaked lime का दूसरा नाम क्या है? Calcium hydroxide. When we pass the chlorine gas to the slaked lime or the calcium hydroxide, then the calcium oxychloride bleaching powder is formed and water is also along with this form, right? So water is also formed. So how can we say? It can be formed from the slaked lime or calcium hydroxide by passing the chlorine gas. This manufacture preparation you have to learn. Now next what we have to learn about this? What are the uses? इसके uses क्या है? ये जो है ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना ही होगा फॉर ब्लीचिंग द कॉटन. कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसे हम यूज करते हैं, वुड पल्प को पेपर इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ लॉन्ड्री में इसे यूज किया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे यूज किया जाता है कई केमिकल इंडस्ट्रीज में. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट. इट इज ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट. तो ये यूजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे. क्यों? कई बार वो अगर आपसे सॉल्ट का नेम निकलवाना चाहते हैं तो वो आपको यूजेस बताते हैं और उन यूजेस की हेल्प से फिर आप सोच सकते हैं ये दिस इज द सॉल्ट और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको बतानी होती है. तो वाइस वर्सा कैन आल्सो बी काम. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बच्चे इसमें है थर्ड कंपाउंड आज के लिए दैट इज पीओपी. पीओपी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस पीओपी? पीओपी इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट? पीओपी इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम बोल सकते हैं इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसका दूसरा नाम क्या है? ध्यान से सुनिए. कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी मीन्स हाफ, जिसमें हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेट फॉर वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट. यू नो द फॉर्मूला CaSO4. So how it can be prepared? This is known as the gypsum. इसे हम क्या बोलते हैं? gypsum. और ये यहाँ पे 373 केल्विन के टेम्परेचर पे जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारा पीओपी बन जाता है. व्हाट इज दिस? पीओपी. पीओपी इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट इज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी फॉर हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. एंड हाउ इट इज फॉर्म? इट इज फॉर्म बाय द gypsum. When we heat the gypsum at 373 Kelvin, ठीक है? When we heat the gypsum at 373 Kelvin, plaster of Paris is formed, and this 3/2 water of crystallization is left. You can balance by this because 2 is here, so half. And in place of 3/2, you can also write this 1/2. Both are correct way. अगर आपको बुक में कहीं जगह 3/2 की जगह 1/2 दिखाएगा तो it is also the correct form. And what are the यूजेस इसके क्या है? देखो ये पीओपी जो है इट इज वाइट कलर, राइट? और इसके यूजेस हम बता सकते हैं इन द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज. इसके बिल्डिंग में पीओपी का बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. प्लास्टर है फ्रैक्चर, जो पहले बोन्स में हमें फ्रैक्चर हो जाता था उस पर हम वाइट प्लास्टर लगता था वो इसी पीओपी का लगता था. डेकोरेशन में डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं. डेकोरेशन में वॉल्स वगैरह में हम यूज करते हैं. चॉक्स बनाने में यूज किया जाता है. ऑर्नामेंट्स वर्क में भी इसे यूज किया जाता है. एंड मेकिंग ऑफ स्टैट्यूज जो देखते हो आप उसमें भी इसे कास्ट ऑफ स्टैट्यूज जो मैदान है उसमें उसमें भी जो स्टैट्यूज बने होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है. तो काफी जगह पे इसका यूज है. आप अपनी बुक से भी इसमें पढ़ सकते हो कि इसके क्या यूज है. एंड
दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिवर्स। ये जो रिएक्शन है इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर डालें और उसे सेट कर दें, राइट, ये तो मैंने बोला कि जब हम जिप्सम को हीट कर दें तो हमारा ये बनता है, लेकिन इसकी रिवर्स कैन ऑल्सो बी ट्रू। The reverse reaction of this is also true. Reverse means कि like this CaSO4 dot half H2 plus 1 by 1 H2O gives you। अब ये कैसी है जब इसकी हम सेटिंग करें, राइट, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बच्चे CaSO4 2H2O। अब यही आपका क्या है, पीओपी है। पीओपी से सेट कर दिया हमने, फिर से वापस हमारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो इट इज ए प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड सॉलिड में हो जाता है 5 to 15 मिनट, बिकॉज इट इज गेट हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड मींस इट कैन एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड इट फॉर्म्स द जिप्सम आल्सो। आपने एक हार्ड सा माल बन जाता है। अगर आप पीओपी को खुला छोड़ के रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो हार्ड सा सब्सटेंस बन जाएगा, अगेन वो आपका जिप्सम फॉर्म हो जाएगा। फिर उससे अगर हमें जिप्सम से वापस पीओपी बनाना है तो we have to heat that gypsum at 373 Kelvin. This is the method for making this PU. Right? इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि what do you mean by water of crystallization? Water of crystallization at what do you mean by water of crystallization? What do you mean by water of crystallization? What do you mean by water of crystallization? अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है हम ले सकते हैं, दे आर द सर्टेन सॉल्ट्स इन व्हिच such we can say these are the hydrated salt, the water molecules that form part of the structure of a crystal, the water molecules that forms the part of the structure crystal, it is the we can say part water का ही molecule का part है, it is the part of the water molecule जो कि उस structure का part बन जाते हैं। कैसे, अब इसमें आपके बुक में एक एग्जांपल बड़ी अच्छी एक्टिविटी दे रखी है CuSO4 डॉट 5H2। अभी हमने देखा, और हमने कौन सा देखा, Na2CO3 डॉट 10H2। अभी हमने एक और देखा CaSO4 डॉट 2H2। ठीक है, तो ये कई सारे देखिए। तो अब ये जो वाटर है ये इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली, और यहाँ पे ये अलग से वाटर ऑफ, इसे हमने नेम दे दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि वी कैन से इट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इट इज द water molecules that form the part of the crystal, कि इस वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये पार्ट है एंड इट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। एंड वही अभी मैंने आपको बताई कि द सर्टेन सॉल्ट्स व्हिच कंटेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ सॉल्ट्स के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इन सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। दीस सॉल्ट्स आर नोन एज द हाइड्रेटेड salts जिनके पास water of crystallization present होता है। Again I am repeating the definition of water of crystallization. The water molecules that form part of the structure of a crystal are called the water of crystallization. And these which contains the salts water of crystallization, they are known as the hydrated salt. और कुछ salts में water of crystallization नहीं होता। For example मैं ये दे रही हूँ Na2CO3 CuSO4, अब they do not contain the water of crystallization. So what they are salt for? They are called the anhydrous salts. They are called the anhydrous salt. Anhydrous salts are those salts which do not have the water of crystallization. आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कॉपर सल्फेट की, 2.11 एक्टिविटी हो गया, आई सपोज आप चेक कर लेना। तो उसमें क्या है, उस एक्टिविटी में यही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की ही वो एक्टिविटी है। What is that activity? I am going to tell you that copper sulfate dot 5H2. Copper sulfate dot 5H2. अब what is this? This is the hydrated copper sulfate. This is the hydrated copper sulfate. What is this known as the hydrated? Because it contains the 5 water of crystallization and its color is blue. अगर आप इसका कलर देखेंगे तो ब्लू कलर है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट दिस, क्या होगा जब हम इसे हीट करें? व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट दिस? व्हेन वी हीट दिस we'll get this CuSO4 plus 5
5H2O. Right? CuSO4 plus 5H2. A 5H2 that you know water. And what is this? This is known as the anhydrous copper sulfate. What is this? Anhydrous copper sulfate, and that you know water of crystallization. You can write simply water, and its color is white. Earlier it was blue. When all the water of crystallization removed from this, then it will become the white color, and its name is known as the anhydrous copper sulfate without water of crystallization. Again, if you, it is reverse also. Again, if you will add water of crystallization in this, what is this? Is the color of white. Then again it is CuSO4 dot 5H2O. Again it will become of blue color. Now it is again blue. So white to blue. This is the vice versa. If you remove the water of crystallization, it is an important activity in any form. Please remind the color also, anhydrous, hydrated, all these things. Now this chapter is over, so you can do the boxes and exercise of this chapter. Thank you, dear students.